occasion of National Science Day to celebrate the spirit of science and innovation. This day holds immense significance because of the discovery of Raman effect by the great Indian physicist C.V. Raman on 28th of February. Sir C.V. Raman got the Nobel Prize for his discovery in 1930. So, as we all are here, on this event, let us reaffirm our commitment to the pursuit of knowledge and acknowledgement of science. So, let us rededicate ourselves to the noble cause of science on this occasion of National Science Day. So, on this special occasion, the lighting of the lamp holds the profound significance. It is the sacred act that signifies the divine blessing and the illumination of our mind. So, before we start our event, we would like to invite our guests to light the lamp of knowledge and wisdom. So, I would like to invite Dr. R.P. Mahapatra, Dean of SRM ISD, Dr. Naveen Anawat, Dean of Science and Humanities in SRM ISD, Dr. 𝗾𝗂𝗲𝗶𝗲𝗹, Associate Editor of Chemistry Select, and Mr. VedPrep Biology Academy, Founder and Director of VedPrep Chem Academy. Jnanam Arogyam Dhanasampada Satyabhuti Vinashaya Jivan Jyoti Namostate Jivan Jyoti Namostate Jivan Jyoti Janatana Jivan Jyoti Mahapatra Jivan Jyoti Janatana Now I would like you all please rise from your seats as we offer Saraswati Vandana, a prayer to seek guidance and inspiration from divine source of knowledge. Ram Netu Tushar Now I request all the guests to please have a seat. As we embark on this journey of celebration and acknowledgement, let us take a moment to shine our spotlight on those we have made remarkable contribution. The individual we honor today have exceptional skills, passion in their respective fields. Now I will like to call So I would like to call Dr. R.P. Mahapatra to facilitate Ved Sir.
Now I would like to call Dr. 𝗃𝗲𝗲𝗹, Dean of Science and Humanities in SRM IST, to facilitate Dr. 𝗃𝗂𝗲𝗃𝗲𝗹, who is the our Associate Editor of Chemistry. Now I would like to call Ved Sir to facilitate our speakers, R.P. Mahapatra, 𝗃𝗲𝗲𝗹, and 𝗃𝗂𝗲𝗃𝗲𝗃. Ved Sir. Ved Sir will facilitate now 𝗃𝗂𝗲𝗃𝗲𝗹. Now Ved Sir will facilitate Dr. 𝗃𝗲𝗲𝗹, Dean of SRM IST. So we are especially delighted to welcome our distinguished guest, whose expertise, wisdom, and insight will undoubtedly enrich our discussion and contribute to the success of this event. Now we'd like to call Dr. 𝗃𝗲𝗲𝗹, Dean of Science and Humanities in SRM IST, to deliver the welcome address. Sir. नेशनल साइंस डे पे केमिस्ट्री क्षेत्र के कुछ चाहने वाले बच्चे आपका श्री वेद प्रकाश जी शर्मा जी का, मैडम खुशबू का और SRM IST के डीन डॉक्टर R.P. महापात्रा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम, जिसका मकसद है कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन केमिस्ट्री, आपके लिए अच्छा रहे, आप इससे कुछ सीखें। आप स्टूडेंट्स जब भी कोई एकेडमी अपने कैरियर के लिए चूज करते हैं तो आप देखते हैं कि वो एकेडमी में क्या होना चाहिए। जैसे अर्जुन था तो लोग मानते हैं ना द्रोणाचार्य से सीख के आया है, तो इसीलिए ये वेद जी जो नए नए अपने जो गेस्ट स्पीकर्स आपके लिए ला रहे हैं और जो लैब्स दे रहे हैं, तो SRM और कैम एकेडमी दोनों अपने अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि इनकी गाइडेंस में आप बहुत आगे जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपकी करियर के लिए बहुत संभावनाएं हैं, उन्हें एक्सप्लोर करें। इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। Thank you, sir. Your words have inspired us and added immense value to our event. Now we would like to invite Professor R.P. Mahapatra, Dean of SRM IST, for keynote address. Good afternoon to all of you. This is my colleague, Professor all of us, Dr. Garima, Ved Prakash, and Dr. Piyush, or my colleagues. It's the best platform where the students coming from different background, different regions, but I think so all are chemistry background. Am I right? All are postgraduate. Very good. It's a good thing really. Undergraduate? BSc chemistry? Very good. As you all are a chemistry graduate, for you the future is very bright. Why? One is MSc chemistry, right? In the good universities.
Second, you can enter in the industry also. Even chemists, the post, what is pharmaceutical companies, even other companies that taking either basic chemistry or MSc chemistry. But those are in MSc chemistry, for them, the best opportunity, they are working R&D. And their salary is far with the class one salary. Right? Second thing, government also having lot of opportunities for the MSc chemistry. Pharmaceuticals, government sector, again group gates, you can compete also for the MTech in chemical engineering, IITs, right? After MSc chemistry, again, after this also, all things. One is the PSU. All of you know PSU? All of you know PSU? Nowadays, PSU, they inviting the graduate engineer in chemical engineering or MSc chemistry. It's one good opportunity for all of you. This is the right time to prepare for your PG program. Parallelly, you can prepare for other things for job also, even your civil service examinations. How many of you interested in the examination? Just I'm asking you. How many of you interested? No one. No problem. It's up to you. It's of interest. But once it will come in the as BSc chemistry, MSc chemistry, what happen always what happen as fear is there. Civil service it may or may not sure. Right? That's why not no one is interested. Who will be the time 3 year, 4 year, 5 after that again 0. Right? Is your it's okay. But if you have that much spirit, then you can go. Otherwise, there is good future. MSc chemistry after, think for the all the industries. If nothing is there, go for the chemical engineering and it gets good. Okay, and go to IITs and all the IITs, MTech chemical engineering, is a very 10% benefit. All pharmaceutical companies nowadays are coming to recruit MSc chemistry. Why? After COVID-19, the demand of the chemistry field is more because they work in the R&D department in the certain pharmaceuticals. Clear? Because nowadays the counseling is a major factor that stage you are now. Our time no one knows. It came with okay, well complete two things, engineering or medical. Prepare this or that. Nowadays lot of directions are there, lot of windows are open. You can go any open window, you can move. This is as I told before I told. After all also, nothing is there. I'm telling you. The best things I will tell you, get some experience in any pharmaceutical companies, you will get a job. If you are experienced, go to Middle East. Very sorry. Get the opportunity I'm telling you for you. Your age may be 21, 22, 20 maximum. I hope so. Right? 21, 22 maximum, maybe 20. So if you just 2 years will be the time for postgraduate, your career is more bright. Again, MSc chemistry, how many of it is to 2 years? But very good. You are all are final year BSc? Okay, good. What is your aim to do MSc chemistry or in other things? Because the options are more now, please. Right? And then study also be serious for 2 years. Then you get the job. Whatever not physics, math, I will tell you. If you do MSc math and physics, math, they'll do PhD, they'll go for lectures. Much like that. Things like that. Not other dimensions are there. But if chemistry case, two options are there. Right? So I hopefully will utilize your career and God bless you. Thank you. Please serve me fully. Now we are thrilled
to invite Dr. 𝗾𝗲𝗲𝗹𝗲𝗀, editor of Chemistry Select for Keynote lecture. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. First of all, let me thank Dr. 𝗳𝗲𝗲𝗀𝗶, Head of the Department at the University, Dr. 𝗳𝗲𝗲𝗃 for the organization, and also I would like to thank Professor 𝗳𝗲𝗲𝗃 and Dr. Mahapatra, who are the deans of the University. So, very thankful to Professor 𝗳𝗲𝗃 for the invitation. And it's a real privilege to be here among the students and sharing some options in chemistry. So, as Professor Dr. Mahapatra has already explained that there are a lot of options in chemistry. So, I'm going to discuss a few options that you can consider after your master's or PhDs. But before that, I would just like to give a brief introduction about my company. So, I'm an associate editor working for various chemistry widely journals. So this is my career biography. So I did my master's and PhD from University of Delhi in the area of organic synthesis, which involved basically synthesis of nitrogen and sulfur containing compounds and their antimicrobial as well as anti-cancer activities. Then I went for a postdoc at University of Edinburgh in Belgium, and I spent nearly 3 years where I worked in the methodological development and also transition electrolyte synthesis. Further, I did another postdoc at University of Gothenburg in Sweden, where my work basically focused on organic materials. So I synthesize the rich molecules. You can probably, I don't know if you have heard of these molecules, but like hexabenzocoroneals, which are 12-membered rings, and their applications in material science. So all these works were quite interesting. But after that, I thought that, okay, what I can do after doing my postdocs and should I go in academia or in industry? And I just knew these two fields after my PhD. And I think most of you are in a similar situation that you are not aware of many options after what you can do after your master's or PhD. So obviously, I published many research articles, and then I was looking for other options. And one of the options that came to my mind is the publishing, because I think that in PhD we develop several transferable skills. So we develop the project management skills. We also supervise the master's students. We also negotiate with the several vendors, and we do a lot of things that are actually very valuable skills, but we do not realize. So that's why we need to focus on our transferable skills and also soft skills, and then we can look for other opportunities in several other fields. So I joined the chemistry select as an associate director in 2019, and today I'm also working for the AFM, which is a
high impact advanced functional materials journal, chemistry journal, and Asian journal of organic chemistry. So I hope that you are aware of these journals. These are the Wiley journals, and we publish the research articles or review articles published, research done by the professors, faculty members like Dr. Mahapatra, Dr. 𝗂𝗲𝗲𝗹. So basically, these are some of my selected publications because I was not a born editor, so I didn't know anything about editing, about being an editor, what is job, what would I be doing on a daily basis. I didn't have any idea, but I just wanted to try something else, rather than going in the academic institutions or in RA. So yeah, so the agenda for this short presentation is about introduction to why, which I have already given you some introduction. But I will tell you a little bit more about my company, then jobs after PhD or masters, and then the jobs in publishing. So basically, Wiley is a US-based company. It was founded in 1807, so it is a very old company. And today, the seventh generation of Wiley family is still involved in the business. So it was initiated by John Wiley and Sons. The company is headquartered in Hoboken. We have around 15 million researchers as our customers, 5,000 employees, and 222 online programs in partnership with universities and the fields published with us. So more than 450 novel laureates have published with Wiley. So we have 70 offices in 28 different countries. In India, we have 3 offices in Noida, Bangalore, and Pune. And this is a team India. So as you can see that so many people, so many masters and PhDs, they all joined Wiley as deputy editors, as associate editors, or as assistant editors. So the chemistry journals are published in Weinheim, which is a town in Germany, and where we have around 400 employees from 29 nationalities. So we have people from different countries working together. We have more than 200 scientists, so who are like PhD and several masters, and we publish around 80% journals in Weinheim. So Wiley online library, where you can access these journals, we have around 1,600 journals, 21,000 books, and then 7 reference works. Wiley books are very famous. So if you have not heard about journals, I hope that you have heard about our books, right? Yes. So all this you can access on Wiley online library. Then these are our top Wiley journals. IIT-JAM is a flagship journal with an impact factor of around 50. Then we have Advanced Materials, Chemistry, European Journal, Cancer, Advanced Functional Materials. So these are the top downloaded journals in Wiley online library. Sorry. Yeah, so basically Wiley partners with the societies. So we have ACES, Asian Chemical Editorial Society, where the several chemical societies from Asia have partnered with Wiley. So, for example, CRSI is Chemical Research Society of India, which has partnered with Wiley, and together we publish 3 journals. So, Chem Nanomet, Asian Journal of Organic Chemistry, Chemistry, and Asian Journal. So, these are the journals which we publish with ACS, and the founding Professor Sina Rao, I hope you have heard his name. So he was one of the founding members for this CES. And the current president, Professor Keynote has also collaborated with us. So we do several author workshops and several virtual symposiums with CRSI. Indian connection. So many of the faculty members from universities, IITs, ICARs, and various other universities are serving as editorial board member for our journals. So editorial board members plays a very important role where they help us in journal development, shaping the journal, and also for planning the special collections. So we have done some of the projects. I will not go into detail because I think for you, I will come to the interesting part. That is job after PhD or masters. So how many of you are willing to a PhD? Have you thought about it? Okay, so I see some hands. So from my personal experience, I can say that PhD is really very valuable. If you want to grow in any company, if you can join as after your masters in a company, but if you want to grow, then I think PhD is a must, and I would recommend you that you should consider doing PhD because you develop a lot of transferable skills during your PhD. Not so much during your masters. It depends
from which university, which kind of exposure you are getting. In SRM University, I'm sure that you are getting a good exposure. So it depends on that. But I think that during your PhD, you also learn a lot of things, not just research, but also several other skills which are very useful. So what we can do after your master's or PhD? So there are some areas you can explore, such as application scientist. So application scientist, these are the jobs in companies, in R&D companies, and as well as in several other companies, pharmaceutical companies as well. So where you are not doing the bench chemistry, you are moving away from bench chemistry, but you are more into business development. So you come with a planning, you are very good, you have a good project management skills, technical knowledge of your sector. Also, you know how to analyze the market. And if you have these skills, then application scientist is something that you can consider. Then R&D project manager. So bigger companies like BASF, Bayer, all these bigger companies, they hire R&D project managers. So and for that you should have so you should have strong cost management skills. So where you are responsible for a project. Sorry. So where you are responsible for a project, for everything, how much cost and what would be the milestones, what is the deadline, you have to complete the project in the deadline. So these skills are required. Then product manager also is a very good option if you can work with different teams. You have to work with, say, sales team, marketing team of your company, as well as you should have a good knowledge of the product development. Then market research analyst. This is also a very good job option where you acquire analytical and quantitative skills as well as the technical knowledge of it. Then some jobs in intellectual property. So I hope you have heard about patents. So this is also a very good area where you can be an intellectual property lawyer. So where you should have a law degree, you should have a writing skills. After your master's, you can go for patent law degrees. So such as Nalsa University of Law, they provide you a degree. Even they provide you online degrees, and many such universities are there. This is something that you can consider where you are responsible for filing a patent for your clients. Then patent agent or scientific consultant, where law degree is not required. Basically, you are involved in drafting the claims, submission. So I hope you understand what is a patent, right? That if you develop a technology in your lab and you want to patent it, okay, you want to be the sole user of that development. So for that, you can become a patent agent, for example. You can also become a patent examiner. So to determine if the patent should be given or not, if the technology, if the novelty is there or not. So these kind of investigations are also required, and you can become a patent examiner. Then technology transfer officer is something. I don't think that we have many jobs here in India, but in the foreign universities, you can get these kind of jobs where you are working in a university, but you are identifying the key areas where you can get the patent. And then you can become a basically technology transfer officer. So the jobs related to writing and editing. So you can also become a marketing communication specialist. So here the requirement is basically simple, where you should have an experience of probably writing a paper, writing an article, or editing experience. So some manuscript preparation, that sort of experience you should have as your master's or in your PhD. So and these are the jobs for you. So for example, you can also become a scientific writer or technical editor, and I have seen hundreds of jobs like this. So for chemistry, masters, PhD, there are a lot of opportunities. It's just that we should not be fixated on just going in academia or just going in R&D. We should just be open about the markets, and we should be aware of the possibilities. Scientific journalism is something that you can also consider if you are also interested in that. Then medical writing, writer or medical communication is a very known field, and there are several master's PhDs working in this area as well. Something related to government sector is science public policy advisor.
we have sometimes this kind of openings where you work with the policy makers, should have interpersonal skills, communication skills, diplomacy, because basically you are bridging between the scientific community and the government. So you should have a good diplomatic skills, and obviously you should be good in writing. Then science ethics is something that is also coming up nowadays, and you can also consider that. So I hope I'm able to give you some uh, areas that you can consider after your PhD or master's. And then finally, I will talk about the publishing and the jobs. Why that time? Yes. Okay, so publishing, the role of the journal and publishers. First, you should have a bit of understanding that what we do. So, as a journal, as a publisher, we basically publish the research work that is done by the faculty members. Uh, and there are several services that we offer. So, for example, when several researchers are working, it is important to know that who did what first. So, who did this experiment first, who did this invention first. It is very important. So that is the first part, that's registration. That if you are publishing with us, you are registering your work, that you are the first one in this field or you have done this. So you get the credit of your work. So then we provide editorial and author services. So we, for example, you need a submission portal. When you want to submit your work, you need something where you can submit. Okay, so we provide those services. Editorial manager, we say editorial manager. So where you submit your work, that portal and services we provide. Then you something authors also need help with their English, for example, with their editing. So then we provide bilingual editing services. So there you can, as a faculty, you can submit your work and then we can help you in improving the quality of their work. So after you publish, it is also important that you do marketing, that you let everybody know that you have done this work. So obviously, then we publish this work and we on the social media, through social media platforms, we advertise about your work. So it is important that the work, that your manuscript, the paper which is published is always available. So we make sure that we upload it on our database on the cloud and that it is always available. And then the community outreach activities. So such as this one. So where we interact with the young minds, with the researchers, and we understand their concerns, and we work together with them to communicate the scientific discoveries. So this is the role of the journal or publishing. So journal editorial office. Basically, there are two kinds of office. Uh, one is internal editorial team, and one is the external editorial. So there are two kinds of publishing models. So at YD, we follow internal editorial team. So which means that we are PhDs or masters and we left academia or we didn't join industry and we are full-time editors. So, and we are responsible for looking at the manuscripts submitted by the faculty members. And we are also involved in acquisition of the manuscripts and also the whole screening. I will talk about this in detail a little bit later. So, and then we have another system which is followed by, for example, American Chemical Society, ACS or RS, Royal Society of Chemistry. So, where the academicians, the faculty members who are presently working somewhere are also working as an editor. So, they are not full-time editors. So, these are the two models. Either you become a full-time editor or you are a faculty member and you are also working for some journals. Okay. So, at while you follow the internal editorial model. Sorry, no, it's slides. Yeah. So, as an editor, so what are the various possibilities? So, you can first become an editorial assistant. So, for which masters is a requirement where you basically help the associate and assistant editors, and where you are basically look at the pre-screening and some specific parts of the manuscripts. You can become the assistant editor, which is basically a training period where you are also involved in handling manuscripts. So, you review the manuscripts and also copy editing, proofing, peer review. Okay, and then you can also become associate editor. So it is a series, like it's a
system that you join either as an assistant editor or associate editor, and then the path you can follow. So as an associate editor, you have some extra tasks. So you handle the manuscripts, you manage the peer reviews, but you are also working in social media covers. You are also working in open access, journal development, and from associate editor you can become senior associate editor. So this is a career path. Then the another position that you can get at these journals is the managing editor. So we are basically you are involved in the journal management. So you are involved in journal management. So how many submissions are there? You are responsible for increasing the submission of your journal. So those sort of things are involved in the managing editor. Deputy editor, which is second in command after editor in chief. So if editor in chief is not available, then deputy editor knows everything what we do. And with the deputy editor and editor in chief are involved in shaping the journal content, scope, and making final decisions on editing. Okay, so what you will do on the daily basis, so as associate editor, assistant editor, these are the starting positions. So you will basically look at the manuscript and you will understand, try to evaluate the manuscript if it is suitable for your journal or not. So if you are working for a particular journal, it has certain requirements. So you know those requirements, and then you are judging the manuscript that if it is suitable for your journal, or should it be transferred somewhere else, or should it be rejected, or should it be accepted. So you have to make all these decisions, and obviously for that you should have good knowledge in your subject, and you should also know your journal very well. That what are the requirements of your journal. Okay, I hope it is clear. And another important thing is to follow the ethical guidelines. So many times we see the issues of plagiarism. We see that someone copies someone else's work and try to publish as if their own work. So those you also have to be careful. You have to have good analytical skills where you can identify these issues with the manuscript. And this is on the daily basis. This is what we'll be doing as an associate or assistant editor. So how an editor read a submission? So I think this probably is a bit too much for you. I think in general, I better to understand that basically you have to make decisions based on your evaluation of the manuscript, which could be either to reject the manuscript or to accept the manuscript. Of course, you will get the help from reviewers. So reviewers provide you their comment, and on the basis of reviewers' comment and your own judgment of the manuscript, you will make a decision. So, but you should know that what kind of decisions you are making, and you should uh, follow the journal's requirement. You can also become a reviewer or peer review manager. So, for a reviewer, obviously, again, you have to analyze the manuscript and you have to provide the comments. So, again, you should have a good knowledge of the subject. Then only you can become a reviewer. So, nowadays, we have the companies like Inago or Cactus, and they are actively looking for PhDs or masters who can review the manuscripts. So, if you are good in analyzing, you have good analytical skills, you have good knowledge of the subject, you can also become a reviewer or a peer review manager. So this is our Weidheim, Germany office, and these are the different journals and editors. We sit closely, and we also discuss the manuscript. So if something is that I cannot understand or it is not in my subject area, I can discuss with other editors. So what is the editor's role? It is basically about balancing. So sometimes you will get calls from angry authors who are very dissatisfied with your decision. So you have to be diplomatic, and you should explain that what is the reason behind your decision. You should be clear that why you rejected this manuscript. So it is basically balancing all the stakeholders. Finally, what else do editors do? So apart from handling the manuscripts and evaluating the researchers' work, you also are involved in application of articles. Sometimes you invite authors to write reviews, mini reviews, concept articles for your journal. You should know the latest development of the competition. What are the competitive journals in your field? If, for example, in organic chemistry, what are the different journals? What they are doing? What you should do to get more number of submissions? So those sort of work is also involved. So with this, I thank and everyone. And if you have any questions, let me know. I will get back.
No questions? आप करते हो तो उसके बाद आप ये सेंड करते हो वो एक्सेप्ट किया ट्रांसफर किया ट्रांसफर टीचर्स के पास होता है दोनों जर्नल्स के पास होता है आप You know, state publishers are so while you have many journalists. So suppose that a journal has a high assessment, say humanity, so flagship journal has a catastrophe child. Now so I know that this work is not suitable for my work. I think the novelty of this work is lost. So but I know the other journals are being out judgmental bias. And I can transfer the manuscript to a lower academic level. For example, but it is the same problem. We cannot transfer manuscript outside our system. So, for example, as a 𝗲𝗲𝗲𝗹 editor, for transfer, there is no mechanism that I can transfer my manuscript, which is submitted with 𝗲𝗲 to say RSC or JC. सवाल ये है जैसे आपने बताया कि एमएस आफ्टर एमएससी और बेसिकली द इजी ऑप्शन ऑफ द जॉब इन द पब्लिशिंग लाइन बट हाउ कैन वी गेट कहाँ से हमें जानकारी मिलेगी कि हमारे वेबसाइट पे ऐसा पोर्टल जहाँ पे हम बच्चे कॉमनली सर्च कर सकते बिकॉज मेरी मेन है कि जॉब तो निकलती है ठीक है बट सही बच्चे तक पहुंचना किस तरह से बच्चा उसको अप्रोच करे कहाँ उस पर जरूर फॉलो करे So I think that first of all, we should have general knowledge. What are the various options? As I discussed, science, technology, transfer of the procedure. Of course, you should have general knowledge of very broad area. And then secondly, you should use some social platform. So for example, LinkedIn. So I basically am on LinkedIn. So and where I see a lot of communities in this area. While the ICT, everybody publishes nowadays a job and like for LinkedIn. So and she did those and LinkedIn itself is a good platform. So I recommend everybody to check on LinkedIn and publish about your work as well, what you are made, and this campaign and do for course. So आप यूनिवर्सिटी काफी सीनियर के साथ आप कनेक्ट हैं आईटीज के साथ सीनियर्स के साथ में क्या आप अपने यहाँ से कोई ऐसा क्लास जो सेलिब्रेट कराते हैं कि यूनिवर्सिटीज में भी पहुंच जाए क्योंकि बच्चा कहने लगे कुछ होता है कि नेटवर्क नहीं लेकिन बारे में सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता इसको अगर डिपार्टमेंट के बोर्ड से या किसी से जानकारी मिले तो क्या वायलेट इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसको शेयर करता है so if they also open for other functions, where we give a lot of because widely what we do, not talk about job opportunities in like this is character development program. So that's why I'm talking about it. But otherwise, it is more about why and what we but sometimes we are our editors also talk about any openings in these platforms honestly. So yeah, that's literally yeah. Even मेरा सवाल कोई भी हो और मन में है चलो दूसरा सवाल क्वेश्चन How much salary can they very So salary, I would say, is at par with the assistant professor level and in government schools. The quoted gets around 1 lakh, sometimes more. It depends on what kind of experience you have. If you have some postdoc experience or uh, postdoc experience is absolutely not necessary for these jobs. Basically, some publishing experience. So there you within your PhD, you got as a reviewer, for example. So, or you have a patent law degree or something extra. So, sorry. So yeah, it depends on your skills and but these are not requirements. The requirement is simple masters or PhD. Production editor, you do not need a PhD. Can be a master's and you can be better. But what is important is how much experience you have about journals. If you acted as a reviewer in your PhD, that will certainly count. So those experience around publishing manuscript, writing manuscript, communication, all those skills are involved.
मैम अगर किसी को हाईली भी अप्लाई करनी है तो व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर हाईली अप्लाई करना है फिर you can apply the assistant manager. They are not only even now. So you can, but you have to be search on LinkedIn, job sites and Indeed. Like SME5, there are some other particular job sites. While they also have their own site, you can also can look at the career part. Right. So that's for that out. You can procedure is they will give you a manuscript to evaluate it. So it's only one. Another is that they just ask you for an interview and they ask you just questions about your broader knowledge in chemistry. So one thing that is required here is to have a broad knowledge in chemistry, not in just one particular area. So because you can have to handle manuscripts in a lot of other areas as well. So you can, if you are able to show that, prove to them that you are in different areas, you have knowledge about different areas, you can say organic chemistry or inorganic chemistry, you have worked in different areas, you have knowledge. Then I think really gets so we have to everything required. There is no such just depend whenever you will take the presentation. If you're expanding, right now we are expanding in India, so there are a lot of problems are here. So thank you, ma'am. Your words have inspired us and added immense value to our event. Now we are thrilled to invite Mr. 𝗃𝗂𝗲𝗹𝗃, founder director of Chem Academy. So नेशनल साइंस डे की सबको आप सबको और जितने भी साइंस डे फैमिली से लोग आते हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस स्पीचलेस नेशनल साइंस डे नेक्स्ट आई वांट टू थैंक यू डॉक्टर गरिमा पांडे मैम हेड ऑफ डिपार्टमेंट SRI आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी और साथ मिलकर काम करने का ये मौका दिया और आज इस जगह पे हाजिर हो रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच I would also like to thank Dr. Archie Mahapatra sir जो यहाँ पे थे डीन सर डॉक्टर नवीन अहलावत जी डॉक्टर खुशबू मैम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी यहाँ पे हमारे साथ केमिस्ट्री एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं और जो भी पूरे देश में या बाहर भी मुझे सुन रहे हैं और ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली मतलब मेरे स्पीच में मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है ऐसा बताने के लिए रेडीन सर ने काफी बढ़िया एलोबरेट किया अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटीज मैम ने तो पूरा एकदम लगा कि केमिस्ट्री क्लास शुरू हो गई है पूरी रिसर्च क्लासेस तो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया तो आई थिंक मतलब मेरा काफी हद तक काम कर दिया है तो मेरे पास कुछ ऐसा बचा नहीं बट स्टिल कुछ अपने एक्सपीरियंस है अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस दिस CDP इज ऑल अबाउट कैसे मेरे दिमाग में इसका आइडिया आया तो ये कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है कैसे आया मतलब ये अच्छा भला तो नेट जैम पढ़ा रहे थे है ना और क्लास चल रही थी केमिस्ट्री फिर ये कैसे कुछ इंसिडेंट है कुछ एक्सपीरियंसेस है उनके थ्रू आपको थोड़े इंटरेस्टिंग भी है सुनना चाहता हूँ बेसिकली 2010 में मैंने आप लोगों का ये फैमिली ज्वाइन किया केमिस्ट्री का उससे पहले मैं एक इंजीनियरिंग फैमिली से आता हूँ सो मेरे लिए ये एक शादी के जैसा था कि लड़की शादी करके दूसरे घर पे जाती है तो वैसे ही मैं एक्चुअली पहले इंजीनियरिंग में रहा एंड देन आई स्विच बैक टू दिस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पढ़ा तो मैं उससे पहले भी रहा क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही मतलब सगाई तो मेरी वहीं से शुरू हो गई जब मैंने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से पढ़ाना शुरू किया बट वो फिर कंप्लीटली मैं शिफ्ट हुआ 2001 जर्नी चलती रही और मैंने मतलब प्राउडली से कि हमारी टीम ने और हमारे इंस्टीट्यूशन में और मैंने इको सिस्टम में इंडिया के
केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनको सालों साल और ट्रेंड और क्वालिफाइड रिसोर्स अवेलेबल करना है, चाहे वो IITs है, चाहे वो IIScs है, चाहे वो प्राउडली मैं इस बात के लिए बोलता हूँ, कहीं भी आप अक्रॉस इंडिया कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा और किसी भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पूछिएगा तो दे नो केम अकेडमी, वो आपको अगर बोलोगे तो 4 केम अकेडमी के हाथ खड़े कर देंगे लोग। सो इसका मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ये सालों साल, एक साल नहीं लगातार 14 ईयर से मैं कंटिन्यूसली इंडिया के और इंडिया अब्रॉड, बहुत सारी सिटीज अब्रॉड भी मैं रिसोर्सेज, ट्रेन्ड और क्वालिफाइड रिसोर्सेज केमिस्ट्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ सिंस मेनी डेज, मेनी ईयर्स। तो जब कर ही रहा था तो काफी बढ़िया चल भी रहा है, तो फिर ये CDP कैसे है, इस पे मैं आना चाहिए, क्योंकि मेरे जो मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, वो अब तो काफी सालों हो गए उनको, तो वो लोग डेफिनेटली पढ़ने के बाद, MSCs के बाद, मास्टर्स के बाद, PhDs के बाद जॉब में या रिसर्च में या कंपनीज में या टीचिंग में आगे गए, अपने करियर में परस्यू करने लगे। तो वो लोग जब इधर उधर सब लोग अपना अपना मतलब जॉब या अपना करियर परस्यू कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं। अभी मैं आपको कल एकदम ताजा ही घटना बताता हूँ। मैं कोटा रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, कल कोटा में खड़ा था, तो इट इज अबाउट रात को 12 बजे की बात है, 12:20 की मेरी ट्रेन। तो मैं खड़ा ही था और मेरे एक दोस्त थे, वो सी ऑफ करने आए थे, मतलब सामने से 3 बैग लगाए नए युवा नवयुवा आए और मेरे को प्रणाम किया उन्होंने, और प्रणाम करके सर प्रणाम, मैं पहचाना नहीं, तो बोले सर वैसे तो अब हम कोटा के बड़े इंस्टीट्यूशन में, उससे पहले मुझे उस इंस्टीट्यूशन में भी कई सारे मिले थे, बट एक स्टेशन की बात बता रहा हूँ, मतलब ऐसे एकदम फ्रिक्वेंट। तो हम आपसे पढ़े थे 17, 18, 14 जो भी बैच उन्होंने बताया, और कुछ भी एन नंबर, मतलब कोई भी पैकेज की, हम इसने पैकेज में सर बहुत बढ़िया यहाँ पे शानदार केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, मुझे बहुत प्राउड है। मतलब ये ऐसा है कि आप एकदम खड़े हो और आप एक्सपेक्ट करोगे ट्रेन और क्या मिल जाता है आप। सो इस तरह से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, ऑल अक्रॉस इंडिया में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, रिसर्च कंपनीज के जो अथॉरिटीज है उनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग है, टेक इंडस्ट्री के जो जाइंट्स हैं उनसे मेरा वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, मुलाकातें होती है। तो सबसे मिलने के बाद मुझे एक तरफ से मेरा इनसे इंटरेक्शन हो रहा है, जो केमिस्ट्री का ट्रेन्ड क्वालिफाइड रिसोर्स चाहते हैं, जो केमिस्ट्री के एंथुजियास्टिक एस्पिरेंट्स चाहते हैं, जो केमिस्ट्री का कोर हार्ट चाहते हैं, इस देश का केमिस्ट्री का हार्ट चाहते हैं, दिल चाहते हैं, उनको जरूरत है उसकी, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हो, कंपनीज में हो। पेटेंट एग्जाम में तो मेरे बहुत सारे, मैं जब बता दी बहुत सारे स्टूडेंट पेटेंट ऑफिसर दिल्ली में, तो बहुत सारे, क्या मैं बोलूंगा आप पेटेंट ऑफिसर का ऑफिस दफ्तर में जाइएगा तो आपको 60-70% क्या अकेडमी नहीं है वहां, गवर्नमेंट। तो हर तरफ से, चाहे बोले वो पब्लिशिंग में है, चाहे जहां भी, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, खाली पब्लिशिंग से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं, तो इतना कॉन्टेक्ट नहीं हो, बाकी सबसे जैसे गुड़गांव बहुत सारी कंपनीज है, आपको तो पता भी नहीं होगा, अच्छी कंपनीज है जो R&D में काम करती है ना, जो रिसर्च में और जो क्या बोलते हैं कंटेंट में काम करती हैं, AI में आजकल बड़ा चल, तो इससे मेरे को मिलने का मौका मिलता है, मैं कहाँ मिलता, तो मेरी आदत भी है, मजा भी आता है लोगों से मिलने का, और इट्स माई नेचर। तो वो सब मुझे कहते हैं कि सर आपने बहुत सालों तक है ना इस केमिस्ट्री की इस फील्ड की सेवा की आपने, बहुत जगह, क्योंकि वो सब स्टूडेंट्स हैं या फिर जानते हैं, बट सर स्टिल है ना, हम जब सर्च कर रहे हैं तो अभी भी टैलेंट हम तक पहुंच नहीं। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि हमें जरूरत है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वैकेंसीज है, बट हमको मिल नहीं रहा, या हमको बहुत जरूरत है लेकिन जितना चाह रहे हैं उतना नहीं मिल। एक तरफ वो लोग, दे आर सीकिंग टैलेंट, दे आर सीकिंग केमिस्ट्री टैलेंट, साइंस टैलेंट। दूसरी तरफ मैं स्टूडेंट से भी बराबर कनेक्ट में रहता हूँ, और मैं देखता हूँ उनमें बहुत मतलब एंथुजियाज्म है, मतलब टैलेंट भी है, और मतलब जज्बा भी है काम करने का, वो सब कुछ है जो एक बेटर केमिस्ट्री रिसोर्स बनने के लिए चाहिए, जो केमिस्ट बनने के लिए चाहिए। तो उस तरफ सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोग मुझे फोन करते हैं, मतलब एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ, दरभंगा की यूनिवर्सिटी की कोई लड़की ने मुझे फोन किया और कहा कि सर मैं दरभंगा से हूँ, MSc की हुई हूँ, मुझे सिंगापुर यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर, मतलब मैं ताजुब कर गया, यूनिवर्सिटी बहुत ही समझ में आता, सब दरभंगा से पढ़ना सोची।
लखनऊ यूनिवर्सिटी बोलती है, इलाहाबाद बोलती, बीएचयू बोलती, आईआईटी बोल देती, बोले नहीं मुझे स्पेसिफिकली सिंगापुर यूनिवर्सिटी में रिसर्च है। और बहुत सारे सिंगापुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, एक आपका कॉन्टेक्ट कभी कभी होता है बातचीत, तो रेफर कर दिए, ठीक है okay। और वो उसके बाद जो भी उनका जिस तरह से प्रोसीजर होता है वो किया, उसमें वो चले गए जो भी प्रोसीजर। तो फिर उससे मुझे लगा कि नहीं, मतलब बेसिकली लोगों में टैलेंट है, स्टूडेंट्स में टैलेंट है, स्टूडेंट्स में टैलेंट है, फोकस, और दूसरे तो वो टैलेंट लेने वाले या टैलेंट की जरूरत वाले नहीं बैठे। तो मैंने पढ़ा के और आईआईटीज में, एमएससीज में या नेट क्वालिफाइड करवा के उनको एक्चुअली कंटेंट से तो मतलब क्वालिफाइड बना दिया, उनको सब्जेक्ट तो आने लग गया, बट अभी भी एक गैप है उन टैलेंट सीकर्स और इस इन टैलेंट रिसोर्सेस के बीच। उस गैप को पाटने का या उस गैप के बीच अब हम ब्रिज बनना चाहते हैं। बिकॉज कितना ही पढ़ा दो, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि वो आगे क्या कर सकता है, उसको मालूम ही नहीं है। मुझे कितना खुशी हुई करो तीनों यार, बिल्कुल यार एकदम शादी भी नहीं हुई, तीनों बैचलर लड़के, वो बोले कि बहुत बढ़िया पैकेज, नाम तो भी वो प्राइवेसी है, मैं पैकेज से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो जिसमें जहां मैं गया था, जिस जगह पे इंस्टीट्यूट में, वहां तो और भी बड़े पैकेज, वहां तो 35 पैकेज टाइप के लोग, 35 लाख टाइप के लोग, वो भी स्टूडेंट थे मेरा, बिल्कुल यार। तो मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है बहुत है। मैंने ये तो मैं एग्जाम ताजा दे रहा हूँ, तो बिल्कुल रात की ही घटना बता रहा हूँ जहां से मैं करते रहा हूँ। ऐसे बहुत एन नंबर ऑफ जगह है जहां पे लोग चाहते हैं कि अच्छे केमिस्ट आए, अच्छे केमिस्ट्री एंथुजियास्टिक एक्सपीरियंस आए, और हमको ये जो हमको टैलेंट की जरूरत है इसको पूरा, और दूसरी तरफ टैलेंट, राइट। तो केमिस्ट्री पढ़ाने का काम तो हमारा चल रहा है, चलता हुआ 14 साल से चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जब तक है वो जान हुआ 1100 जब तक है जान चलता ही रहे, तब तक सांस। उसके साथ आप जैसे लोग जो एमएससी कर लेते हैं आईटी से, किन्हीं कारणों से आईटी से नहीं कर, सीट बहुत कम है, जरूरी नहीं है देश में 250 सीट में ही एडमिशन मिले, पर यह भी जरूरी नहीं है कि आईआईटी से एमएससी करने वाला ही पीएचडी को आगे चला, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है उस दिन मेरा एग्जाम नहीं, कोई इनमें से कोई एस्पिरेंट एग्जाम खराब हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, खराब हो सकता है, विराट कोहली का भी हो जाता है, वो भी 0 आउट हो जाता है, क्या वो टैलेंट नहीं, वो भी आउट हो जाता है, और वो जरूरी नहीं बहुत बढ़िया बॉलर से, खराब बॉलर से भी आउट हो जाता है, होता नहीं होता। उस एक दिन के बेस पे आपका कैरियर ही डिसाइड हो जाए, मैं नहीं। और इनफैक्ट आईआईटी को भी इतना नॉलेज नहीं है, आईआईटी से किसी करके लोग मेरे पास आ, बहुत सारे लोगों को मैं रिकमेंड सीवी भेज करता था, उनको भी नहीं पता, उनको नहीं पता कि वो आरएनडी में क्या कैसे जाता है। वैसे वो बहुत बढ़िया सवाल पूछे, सब उनको मालूम ही नहीं है कि वो 1 लाख महीना कमा भी सकते हैं, पता ही नहीं, लगता है एमएससी है, 20-25 हजार की नौकरी लग जाए तो ठीक है, 30 हजार की लग जाए, शादी वादी हो जाए, ठीक ठाक सब होगा, लेकिन नहीं, अपॉर्चुनिटी इससे कहीं ज्यादा, उसमें या तो लेस एंथुजियास्टिक, लेस इंटरेस्टेड लोग चले जा रहे हैं, जो उसको पूरा भी नहीं कर रहे, बिकॉज 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 और कोई किसी को नॉलेज नहीं थी तो चले गए। तो बेसिकली एक और चीज मैंने देखी जो इन दिनों में 13-14 साल में देखा, कि जिसको पीएचडी करनी चाहिए, करने की इच्छा है, पागल है वो करने के लिए, उसको मौका नहीं मिल रहा, किन्हीं कारणों से, नहीं पता, उसको नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे करना है, उसको मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी के फॉर्म ही कब निकलते हैं, कैसे ही अप्लाई करना है। बहुत बड़े सवाल उसने पूछा, उसके सवाल मुझे बहुत पसंद आए कि बताओ आज ही बताओ लेटर कैसे तक का मामला कैसे है, मतलब लास्ट में कैसे जाएंगे, ऐसा कुछ तो वो मालूम नहीं। और बहुत से लोग जो नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ फ्यू वो कर भी रहे और परेशान, वो मुझसे मिलते एक सबका छोड़ दो, क्या कहते हो, ये सब 3 साल हो गए, आप बस नहीं झेलता, इसका ये मतलब नहीं कि पीएचडी पूरी बहुत अच्छी करनी चाहिए। रिसर्च में तो फ्यूचर जिस तरह से गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है, आरएनडी का जबरदस्त फ्यूचर, जबरदस्त, वही है, राइट पहले, राइट टाइम पे, राइट जगह नहीं,
बस इसी चीज को एक करने का प्रयास है हमारा। मेरा एक सपना है कि मैं ये और करूं कि मैं पढ़ा तो दूं, साथ में उसको बता भी दूं कि इसको जो आपने पढ़ा है उसको यूज कहाँ, आपकी सही जगह क्या, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, नौकरी करनी है तो किधर जाना है, कम उम्र में ज्यादा पैसा, बहुत बड़े बोली सैलरी कितनी है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज इकोनॉमिकली ड्रिवन। वो उनको जिनको किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है उसको कैसे जाना, जर्मनी में कैसे अप्लाई करना है, जापान में कैसे, यूएस में कैसे करना, बेटर कहाँ है, कहाँ लगेगा, या ऑर्गेनिक में बेटर कहाँ, इनऑर्गेनिक में बेटर कहाँ, समझ रहे मेरी बात? सो वो जो एक गैप है, उस गैप को पार्ट में इसको प्रेस करने का प्रयास है हमारे। मैं उसके डिटेल में जाऊंगा, वो प्लीज सर आपको एलोबरेट कर दें पीपीटी के थ्रू इसमें क्या क्या होने वाला है, उसमें मैं इतना समय नहीं दूंगा। मैं आपको इसका मोटो, इसका 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 थीम समझा रहा हूँ कि ये है क्या, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। और ये बहुत नॉमिनल, हमने इसको ऐसी कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, बहुत बड़ी फीस रखी है, बहुत नॉमिनल ऐसे ही है, जस्ट टू सर्व द सोसाइटी, जस्ट टू सर्व कि आप जाओ और किसी दिन, अभी बेरोजगार है, 2 महीने बाद अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं, 1 देंगे तो करेंगे, रुपया भी नहीं मालूम है कोई, लेकिन मुझसे बोलेंगे कि नहीं नहीं, प्रणाम करेंगे स्टेशन पे कि नहीं नहीं सर, वी आर बिकॉज ऑफ, और ये इससे बड़ा तो कोई रिवार्ड होता नहीं, बाकी सब फेक। सो ये करने के लिए हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, ला रहे हैं, बहुत मेहनत करेंगे हम इसमें, और बहुत बड़ी टीम इसमें काम करेगी, केम एकेडमी नहीं, और रिसर्चर्स जैसे मैम अभी आए तो से बहुत सारे गेस्ट जो अपीयरेंसेस रहेंगी, लंडन प्रोफेसर्स इसमें रहेंगे, बाहर के अब्रॉड के रिसर्चर्स रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है इसका आइडिया होगा, आपको ये भी मालूम चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मालूम चल जाएगा कि मैं पीएचडी के लिए बना हूं या नहीं, मैं टीचिंग के लिए बना हूं कि नहीं बना, मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए बना हूं कि नहीं बना, मैं पीएचडी के लिए बना हूं कि नहीं बना, मेरे को पेटेंट अफसर बनना है कि नहीं बनना, वो प्रोसेस मेरे को किक करेगा कि किल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको उसकी झलक मिल जाएगी कि नहीं नहीं ये होता है, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं कर सकता, आई कैन डू दैट, दिस इज वेरी गुड, ये इतना नहीं मेरे से होगा, मैं यार मैं आई कांट यू नो, मैं अपने सारे जीवन और अपनी यंग लाइफ के 6 साल तो वहां ना, मतलब वो गैस सुन के नहीं बिता सकता यार, क्वाइट पॉसिबल, सबके अपने अपने हैं, लैब में ही बिता दूं मैं गैस, मतलब उसमें ही रहूं, है ना, जीवन में उस फ्लास्क है और सॉल्वेंट है और जीवन वही हो रहा, हो सकता है क्वाइट पॉसिबल, ऐसे लोग हैं जिनको, जो बहुत एंथुसियास्टिक है और जो अंडर कर सकते हैं रिसर्च में आके, पर वो पहुंच ही नहीं पा रहे। ये हमारा एक प्रयास है इस साइंस डे पे, अगले 3 महीने में हम इसके थ्रू हमने टारगेट बनाया कि कम से भी कम, मतलब 15-20 हजार लोगों को हम लोग गाइड करने वाले हैं केमिस्ट्री में, जो हमसे पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं, या जो कहीं पे भी हैं, और वो लोग हमसे जुड़े। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज से पहले ना ऐसा प्रोग्राम आपने देखा होगा, ना आज की बात ऐसे बने, क्योंकि इसमें मैं बहुत मेहनत इसको बनाने में लग रही है, और एग्जीक्यूट करने में तो बहुत ही मेहनत लगेगी, मतलब वेरियस इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, रिसर्च लैब से, अलग अलग जगह से लोग इसमें जुड़े, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, अपने टीचिंग शेयर करेंगे, अपने अच्छे और बुरे जो भी उन्होंने देखा है उसके बारे में बताएं, आपको बताएंगे कि आपको क्या बेहतर करना चाहिए, और इस सब में हम वी एज ए प्रिंस काम करेंगे आपके ऊपर, दैट इज ऑल अबाउट blessing ourselves between you and that, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा एलुमनाई बेसिकली बन गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहूंगा हर जगह एवरीवेयर मेरे पीएचडी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, फेलोशिप में काम कर रहे हैं, फेलोशिप फेलोज है, रिसर्च फेलोज है, या पीएचडी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हमारा इसमें हम एज ए
फैसिलिटेटर इसमें काम करेंगे, पढ़ाएंगे भी, आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स भी। उसका एक छोटा सा आप देखते हो कि हम यूट्यूब पे चलाते थे रिसर्च लैब, तो वो छोटा, मतलब उसका टीचर भी नहीं हुआ उस टाइप, उसको हम थोड़ा बड़ा करने जा रहे हैं, उसको प्रॉपर एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो राइट स्टार्टिंग, राइट फ्रॉम योर इंटरेस्ट टू योर प्लेसमेंट, वहां तक की जर्नी हम ये तय करवाने का प्रयास है हमारा इस नेशनल साइंस डे पे अनाउंस। फैकल्टी करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम चलाए, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए। जैसे बहुत मेरा एंथुसियास्टिक प्रोग्राम है फैकल्टी डेवलपमेंट, को बहुत सारे टीचर्स से पढ़ के गए और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं चलो मतलब क्योंकि उनसे परमिशन अभी मतलब बातचीत नहीं हुई तो मैं अपना नाम नहीं लूँ, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट है जो सीआर में कमा, और मैं नहीं कमा, मतलब मजाक की बात है, ऐसे हैं, दे आर अर्निंग इन सीआर्स एंड ओनली दे आर माय स्टूडेंट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सो जस्ट मतलब वो एक पार्ट था जो हमने कंटेंट में अदा किया, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अदा किया। अब हम इसके दूसरा पार्ट अदा करने जा रहे हैं कि आपको आपकी सही जगह पहुंचा। बहुत मुश्किल है ये दुनिया में, सबसे मुश्किल है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कोर्स, ऐसा प्रोग्राम मिले जो आपको आपकी सही जगह पहुंचा। अक्सर लोग, मोस्ट ऑफ द लोगों से आप बात करो, आपसे 10 साल पुराने जो केमिस्ट्री, अंदर से ये कहेंगे कि गलत समय पे गलत जगह है। इसलिए सही समय पे सही जगह पहुंच जाओ। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस सक्सेस, नथिंग एल्स। सक्सेस इज नॉट ऑल अबाउट कार्स और मैंने करोड़ बोला, वो भी नहीं, बट राइट टाइम पे राइट जगह। मे बी किसी को मर्सिडीज की कीमत, मे बी किसी को लैंड, मे बी किसी को रिसर्च पेपर किक देता हूँ, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अंदर से हम तो क्या कर सकते हैं। मुझे क्लास किक देती, आई वाज अ वेरी गुड ऑफिसर इन गवर्नमेंट, बढ़िया, और बढ़िया पैसा, और भी क्लास ऑफिसर नहीं किक दिया मुझे, छोड़ दिया। तो ये तो वो है कि हम हमारी सही है, एक बार वहां पहुंच गए ना, जीवन ना कभी, लाइफ ना कभी सैलरी से सेटिस्फाई होती है या सक्सेस बनती है, ना कभी ये फिजिकमेट्रिस्टिक चीजों से लाइफ बनती है कि मे भी कुछ लोगों के लिए वही, वो बनती है आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट एंड वेयर डू यू वांट योरसेल्फ। इसलिए प्लीज मेरा तो कहना भी यही है, डोंट डू दोज थिंग्स यू डोंट वांट। आप नहीं चाहते उन चीजों को मत करें, और उसको पता लगाने का तरीका है कि आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या है, आप किस चीज के लिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस कैनेडा एंड इज वेरी लगभग ऑफ कोर्स कोई इसका फीस नहीं, मतलब बहुत नॉमिनल, उतना है कि जितना हमारा जो हम इस सिंफा को बनाएंगे उसका कॉस्ट की तरह जो डेवलप करेंगे थोड़ा प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स मैं केमिस्ट्री में अब तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंटर कर चुका, मोर देन लैक। इट्स वेरी वो एक कम नंबर है, मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक नंबर बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगा। उनमें से बहुत मतलब लैक्स अगर मैंने मेंटर किए तो 1000 से मैं संपर्क में भी आया हूँ, 100 से मैं कॉन्टेक्ट में रहता भी। उन सब की डिमांड, वो कहते हैं कि सर बताइएगा ये चीजों को, जरूरी है हमारे जूनियर्स को बताना, बिकॉज हमको जो जानने में 5 साल लग गए उनको नहीं लगती, हमको जो समझने में 3 साल लगे उनको नहीं लगती, उनको बात 3 दिन 30 दिन में समझ में आ जानी चाहिए कि उनको क्या। और यही मैं कहता हूँ, अभी पिछले दिनों एक बहुत हृदय विदारक हादसा हुआ, मतलब मेरे एक स्टूडेंट आया पीएचडी कर रहे थे, मैं बहुत मतलब टूट के रह गया, 2 दिन तक मैं बात भी नहीं करा, मुझे बहुत बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जेम टॉपर, नेट टॉपर, गेट टॉपर टाइप, आईआईटी से पीएचडी कर रहा, और वो अनफॉर्चुनेटली मतलब उसने गलत स्टेप ले लिया। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तुम चीज के लिए नहीं बने ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी चीज।
उससे मैं बहुत सीखता और मुझे बहुत मतलब वो घटना उस अभी की बात 3-4 मंथ बैक वो बहुत ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐसे पीएचडी मतलब बड़ी बात है क्योंकि मतलब और मैंने उसको समझा कि भाई क्या 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 रीजन हो सकता था उसमें यही रीजन था कि मुझे लगता है कि उसको पीएचडी शायद कर रही नहीं होगी वो कर रहा तो शायद वो चीज उसको परेशान कर दी पजल कर दी फिर तो बाकी चीजें तो एक्सटेंड होती जाती है पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे पीएचडी करना चाहते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो एडमिशन ले बहुत है जो जिनका मन ही उसमें लगता है उनको लगता है नहीं लैब है तो जीवन तो अगर ऐसा हो गया ना कि राइट टाइम पे राइट जगह पे राइट टैलेंट आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरा एक प्रोग्राम इस देश के लिए मेरी एक छोटी सी छोटा सा इस कंट्री के लिए नए भारत के लिए मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि मैंने साइंस के स्पेशली केमिस्ट्री और जो और भी साइंस है उनके स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में एक एक पहल की और वो पहल सफल हुई मदद बनने की वो मदद बनना चाहता हूं उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पे पढ़ाए और बाकी सब जो जुड़े हुए हैं एचओडी मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तोमर सर आपका भी थैंक यू वेरी मच एंड ही इज माय स्टूडेंट आल्सो मतलब फ्रॉम माय फर्स्ट बैच तो वो अब यहाँ प्रोफेसर है तो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं टीचर फैकल्टी मुझे बहुत प्राउड होता है हर जगह मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मुझे ये मौका दें जितने भी जुड़े हुए हैं जहाँ पे कि मैं 5 साल बाद ये कहूँ कि सी इज माय स्टूडेंट और इज माय स्टूडेंट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम और थैंक यू It's our deepest gratitude for your visionary leadership and unwavering dedication. Now we are excited to invite Dr. Garima Pandey, HOD, Department of Chemistry, for a event. Yeah. Good evening to you all. Is this a good evening? Hey, good evening, or nahi? Hey. So what's good about this evening? If any one of you could tell me what's good about this evening, just one good thing. It's been more than an hour, isn't it? That you all are sitting here listening to. I mean, you already are done with 4 learned people. You would have got something. There would be something which you would be thinking of. Okay, fine. This is going to be my key takeaway from this particular session or that particular session. So, if anyone of you could tell me what that one good thing. You are the students, isn't it? सब स्टूडेंट्स है अच्छा चलो हिंदी में बात करते हैं कोई एक अच्छा सा टेक अवे जो आपको लग रहा होगा फाइट चल मैं इस दरवाजे से बाहर निकलूंगा या निकलूंगी तो ये बात मेरे जहन में रहने वाली है कोई भी ऐसी बात सर की हो मैडम की हो या 2 जेंटलमैन ऑलरेडी जा चुके हैं दी डीन ऑफ एसआरएमआईएसटी एनसीआर एंड डीन एसएनएच ऑफ एसआरएमआईएसटी एनसीआर 4 में से किसी वन बाय वन जस्ट वन सबसे बुरी भी चलेगी वो भी होता है अच्छी अच्छी चीज याद नहीं रहती जो दर्द होता है ना वो जिंदगी भर याद रहता है जस्ट वन दर्द सबसे पहले हमारी कैम अकेडमी को थैंक यू कि उन्होंने हमें इतने अच्छे मतलब सीडी में वर्क करा यू नीड टू रीड दैट ये दर्द Sit, I got my answer. Sit. Actually, my name, my words actually not at all the part of your speaking. I'm here as being instructed. I was being instructed by the dean of the institution and the SNH just to say thank you and welcome. The formal thank and formal welcome on behalf of SRM-IST Delhi NCR campus. मेरा ना सेशन कहीं है और ना मेरे शब्द आपको सुनने थे तो मैं यहाँ पे आई इसलिए मुझे कहा गया कि वो दोनों कुछ हरी में थे कुछ हमारे वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग स्पीकिंग हुई ऑनलाइन मीटिंग तो दे बोथ हैव टू लीव rather so formally welcome to you all and जो भी इनिशिएटिव बाय द केम एकेडमी है वो इनिशिएटिव में what is the role of SRMRC you need to know right since you are sitting here in the campus of SRMRC Delhi NCR campus you all are bound actually
to know about this institution. For that, I'm having my learned colleague, Dr. Ravi Kumar, who actually is the driving force behind this very event. वही है who is coordinating part. I just provided the support and the guidance as and where required. तो मेरा काम सिर्फ इतना था, और जो मैंने आपको दर्द और दुख और क्वेश्चन और आंसर और टेक अवे की बात करी वो एक्चुअली नींद से जगाने के लिए। नींद से जगाने के लिए क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्रंट रोज में एक मैडम को सोते हुए देखा। मैडम, आई एम नॉट सेइंग अ स्टूडेंट, a madam clad in sari, she was sleeping sitting in the front rows. For that only just एक थोड़ा सा नींद से जगाने वाली चीज जरूरी होती है। तो यूजुअली जब हम अच्छी अच्छी बातें करते तो लगता है things used to get monotonous, सब कुछ एक जैसा हो जाता है, और जब चीजें मोनोटोनस हो जाती है तो आंखें बंद हो जाती है। सो उस मोनोटोनस थीम को, उस रिदम को ब्रेक करने के लिए I just asked you that and I got my answer from that very boy. While answering the question, he had to read the name of the program. So the key takeaway should be that you should be able to tell us or him or her or anyone when you are going out of this auditorium that okay fine, I just devoted this much time of my busy schedule, my precious time to this particular program. मैंने इतना वक्त अपने जीवन में से दिया, जिस चीज को दे दिया गर्लफ्रेंड का नाम ही नहीं याद रहा। जब गर्लफ्रेंड का नाम ही नहीं याद रहा तो क्यों नहीं और सही वाला चलेगा, रिश्ता नहीं चलेगा यार। लॉन्ग लाइफ रिश्ते के लिए किसी एक का तो नाम याद रखना पड़ेगा। ये वो वाली गर्लफ्रेंड बनने वाली है जिसपे शायद शादी हो सकती। Thanks to Thank you, ma'am. sir, for taking such an initiative. The best wishes from SRMST Delhi NCR campus, and I wish and I expect that soon we will be meeting somewhere else, somewhere at some other place which is closer to the organizers and all. Therein we will have some informal discussions. I'm expert at it. So इतना सा तो फेवर मैंने आपको दे दिया. So thank you again, once again. I'm very happy. Thank you, ma'am. We are truly grateful for your time. So thank you everyone for inspiring us. Your support, encouragement and participation means a lot. Thank you so much, sir. Moving ahead, we have got a career development program for all. Today we mark the beginning of an exciting journey towards personal and professional growth for each and everyone who have gathered here. In today's fast-paced and ever-changing world, investing in our own development is very much crucial. This event is designed to provide you with the resource and insights needed to navigate along the pathway of your career and to reach the newer heights in your life. Now I would like to call Pradeep sir on stage to share some more details of this program. ज़्यादा समय लूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है और आप सब मुझे पता है कि लंच आपने किया नहीं है। तो डोंट वरी, रिफ्रेशमेंट रेडी है। आप थोड़ा-सा बस 5-10 मिनट ले लो, उससे ज़्यादा समय ज़्यादा लूँगा। ओके। क्योंकि इसका जो मोटो है प्रोग्राम को ऑलरेडी वेद सर आप सबको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हाई वी हैव डिजाइन्ड दिस प्रोग्राम एंड इसका जो मोर डिटेल वाला पार्ट है वो मैं बहुत ब्रीफ तरीके से बताऊँगा। डिटेल्ड जो प्रोग्राम की फर्दर डिटेल्स होगी वो मैं अलग से एक वीडियो बना के उसको भी यूट्यूब पे डाल दूँगा और आप सब बच्चे उसको देख सकते हैं। ओके। So moving forward, मैं अगर इसको बहुत ब्रीफ तरीके से डिस्कस करूं तो दिस प्रोग्राम है 4 sections. The first one is career scope, second one is research lab, third one is professional talks and the fourth one is placement set. First one contains career scope, जैसे कि आप सबको अभी पता लगा काफी सारी चीजें कि भाई कैरियर में बहुत सारे स्कोप ऐसे भी है जो आपको पता नहीं है या पता है तो उनके जाने का रास्ता पता नहीं है। तो लिटरली सच में पिछले 6 महीनों से जब डिस्कशन चल रहा अबाउट दिस प्रोग्राम और हम बहुत सारे लोगों से कोऑर्डिनेट हुए, even IIT professors Sabi Sapra sir also
I have discussed that with him also, and he has given his full support to guide you people in the right directions. So आप सब लोगों के लिए इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लगभग 150 प्लस सेशंस ओवरऑल डिजाइन किए जाएंगे, जो कि मैं नहीं मैं कहूँगा कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर जॉब में जो स्पेशलाइज पर्सन है वो आपको उसका टॉप देगा, वो आपको उसका सेशन कर लेके उसकी डिटेल्स बताएगा। चाहे वो कैरियर स्कोप के बारे में हो कि कैरियर स्कोप में अगर मान लीजिए कोई पेटेंट ऑफिसर बन रहा है, तो आई विल कॉल सम ऑफ आवर एलुमनाइज हु आर इन पेटेंट ऑफिसर, तो दे विल टेक अ सेशन एंड दे विल टेल हाउ टू रीच देयर, वो बताएंगे आपको कि वहां तक कैसे पहुंचना है। सिमिलरली आईसीएल, बीपीसीएल, बार, डीआरडीओ, ये जितने भी पीएसयू सेक्टर्स है, ये कॉमनली आप जो सुनते हैं वो तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग 100 ऑफ द सेक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने एक्सप्लोर किए पर्सनली, जो मैंने फील किया अपने 6 महीनों में, कि हाँ ये सेक्टर्स तो बच्चों को पता ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, ताकि हम डिसाइड कर ले अच्छा ये सारे हमारे पास ऑप्शंस है, इनमें से इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें अप्लाई करना है, इसमें नहीं अप्लाई करना। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कैरियर स्कोप। सेकंड इज इंटरव्यू टिप्स, उसका जाने का पूरा रास्ता, और ये कौन देगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑलरेडी या फिर जो भी वहां पे काफी दिनों से एक उस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो सीनियर आपके एलुमनाइज आपको गाइड करेंगे। इवन एलुमनाइज के साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स आपको उसके लिए गाइड करेंगे ना। इसमें कैरियर स्कोप में द फर्दर पार्ट इज नॉट इवन अबाउट जॉब्स, हम फर्दर आपको गाइड करेंगे अबाउट योर लाइक फर्दर फ्यूचर, जो आपकी आने वाली स्टडीज है। जैसे कि बीएससी के बाद मास्टर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, मास्टर्स का प्रोग्राम एसआरएम यूनिवर्सिटी भी कनेक्ट कराती है। अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में देख रहे हो तो वो भी अपने आप एक बहुत अच्छा आपके लिए स्कोप है। गवर्नमेंट या फिर आप आईआईटीज वगैरह के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं, आईसर्स वगैरह के लिए ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस मास्टर्स के बाद आप और किस किस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्या केवल मास्टर्स ही है, एमटेक के लिए कैसे अप्लाई करना है, या एमएससी के अलावा आप फ्यूचर में जब आगे जाएंगे तो पीएचडी में क्या अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इंडिया में कहाँ है, फॉरेन में कहाँ है। फॉरेन की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे ऑलरेडी आपके सीनियर्स लोग वहां पे ऑलरेडी सेटल्ड है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यूएस में जाने के लिए रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करें तो कहाँ से करें, कौन से लोग हैं, ये सब डिटेल में इंडिविजुअल हर एक जगह जाने का कंप्लीट पाथवे इन रिटर्न फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे और सबमिट भी करेंगे, जिनके आपके पास एक पूरी की पूरी बुकलेट अवेलेबल होगी। द लास्ट विल अवेलेबल है बुकलेट, उसमें सारे प्रोग्राम्स की सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेगी इस पूरे कैरियर स्कोप नाउ। एंड इंटर्नशिप्स मैंने सब ऑलमोस्ट इंक्लूड कर लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कैरियर स्कोप, कि आप आगे जॉब करने जा रहे हैं तब क्या ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट इज, अगर आप आगे पीएचडी या फिर फर्दर स्टडीज करने जा रहे हैं तो क्या ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शन आपको वहां पे हम एक्सप्लोर करके देंगे। एंड बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल डाउन हो गया है ऐसा, थोड़ा बहुत गाने वाले गाते आ रहे थे बस में, तो तुम लोग कौन कौन से गाने गा रहे थे, कोई एक गाना तुम सब होगा, कुछ कुछ होता है अच्छा। कोई नहीं, दोबारा से मौका मिलेगा आराम से। ओके चलिए, मैं वो जल्दी से फटाफट से खत्म करता हूँ। स्किल इज रिसर्च लैबोरेटरी। हालांकि रिसर्च लैब की कुछ सेशंस हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किए, अबाउट एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें हमने बेसिक नॉलेज आपको दी। अब इसी रिसर्च लैबोरेटरी का एडवांस पार्ट, जिसमें जैसे कि कुछ जॉब्स जहां पे जाने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज मैंडेटरी है कि होनी ही चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट नॉलेज या तो आप एक्सपीरियंस कमा के लाए इंडस्ट्री में 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपको इसी इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उस समथिंग लाइक कि हम वही जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मैं एक्सप्लोर करूं अबाउट द केमिस्ट्री, जैसे कि आप मास्टर्स के बाद या मास्टर्स में बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, दैट इज एनएमआर मशीन, आईआर मशीन, सैम मशीन, टेम मशीन, या फिर आप जीसी की बात करें, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी की बात करें, मतलब देयर इज एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यू शुड नो। क्योंकि अगर आप आगे जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर द जॉब सेक्टर इन आरएनडी सेक्टर और इन द क्वालिटी ऑफिसर जगह, जब भी आप जाओगे तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए। क्यों, आप जब भी इंटरव्यू बैठोगे तो इन इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये इंस्ट्रूमेशन अगर आपको आते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपका एक ज्यादा अच्छा चांस होगा उस जगह पे सिलेक्शन पाने का। अदरवाइज आप फिर बच्चे 2 साल कहीं इंटर्नशिप करके आते हैं, फिर उसको सीखते हैं, फिर वहां अप्लाई करते हैं, तो प्लेसमेंट देने वाली कंपनीज बहुत है प्राइवेट, पहले तो उनको बुलाना, वो वाला काम भी हम कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, इस प्लेसमेंट सेल की कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। चाहिए इनको चाहिए तो हम आपको यही सी प्रोग्राम में दे देंगे, आप इसको सीखो और जाके बैठ जाओ। उस कंपनी को हम इन्फॉर्म करेंगे, दे हैव द नॉलेज, दे हैव द पर्टिकुलर थिंग्स, जो भी है। आप ऑब्वियसली बात है, वो जज भी करेंगे, मेरे कहने पे तो मानेंगे, आपको जज करेंगे बाय द इंटरव्यूज, फिर उनका कॉल है आपको सिलेक्ट करें, कैसे करें, सेकंड राउंड में रखें, थर्ड राउंड में रखें, सेट देयर कॉल। तो हम
वो जो आगे आने वाला आपका फ्यूचर है, दैट इज जो भी आपको जॉब का फ्यूचर आपका इन द सेक्टर ऑफ मैं हायर स्टडीज कर लूं, उनमें जो भी रिक्वायरमेंट जरूरत फील होगी, वो सारी डिटेल्स, वो सारे नेसेसरी टूल्स हम आपको इसी प्रोग्राम में प्रोवाइड करने वाले हैं। लाइक वी हैव रिटन कि ग्रेजुएशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, कुछ रिसर्च। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो तो उसके लिए एसओपी लिखना पड़ता है, प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो एसओपी लिखना पड़ता है, कुछ बच्चों को एसओपी लिखना ही नहीं आता। मेरे पास बहुत डेली का हर साल मतलब एवरीडे कोई ना कोई, इतने सारे बच्चे कॉन्टेक्ट में तो कोई ना कोई आ जाता है कि सर कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे लिखना है, उसको लेकर हम सेशन लेते रहते हैं। बट ये वन टाइम है, एक जगह पे सारी चीजें अवेलेबल होगी, एसओपी कैसे लिखना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, थीसिस कैसी, कौन सी चीजें हैं जो आप 5 साल के बाद लिखोगे तो पहले से मेंटेन करते हुए चलो, सो दैट कि 5 साल के बाद अफरा-तफरी ना बचे। तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल, नॉट मी, मैं नहीं बताऊंगा, आपके सीनियर्स जो ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं, एक्सपर्ट्स, उनको मैं कहूंगा रादर मेंटर्स आपको ये गाइड करेंगे अबाउट सेक्शन, तो सेशन लेके आपको सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो दिस इज द सेकंड पार्ट, द रिसर्च लेबोरेटरी एंड रिसर्च लैब। थर्ड पार्ट इज, हम सब साइंस के स्टूडेंट्स में, मतलब मैं भी पर्सनली फील करता हूँ कि जब अपने टाइम पे था, प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी होती है। हम लोग साइंस डेडिकेटेड होते हैं, अच्छा लग जाओ तो लग जाओ, बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो तो निकाल डालो। हम अपने प्रोफेशनलिज्म मतलब एक प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने में अपना समय नहीं बिताते, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, जैसे कि आपकी एक अगर किसी को मान लीजिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, किसी को मान लीजिए मैनेजमेंट क्वालिटी चाहिए, तो कुछ कुछ बेसिक नॉलेज आपको इन सब स्किल्स की होनी चाहिए। द स्किल्स दैट इज मैंडेटरी, और आपको जो जरूरी है, आप अगर मान लीजिए इस इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर अपने फर्दर स्टडीज में जा रहे हैं, तो वो सारे स्किल्स, तो उनके जो सेशंस होंगे विल बी टेकन बाय द दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट। जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा वो उसको लेगा सेशंस को, और आपको उसका डेफिनेटली एक क्राइटेरिया, जो भी नेसेसरी 2 या 3 सेशंस होंगे, इट इज आल्सो कंटेन्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर 2-3 सेशन होंगे तो इट विल बी कॉल्ड अ ट्रेनिंग, और अगर एक सेशन है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल टॉक। तो दैट्स व्हाई प्रोफेशनल टॉक्स एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग पूरे सेशंस वहां पे होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट लाइक जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं वो आपके लिए सेशंस को लेंगे। वो नेसेसरी स्किल्स जो आपको बिल्कुल जरूरत है किसी भी एक प्लेसमेंट में बैठने से पहले, या कहीं आगे फर्दर स्टडीज को जाने से पहले, चाहे वो इंटरव्यू में बैठने का स्किल क्यों ना हो, वो इंटरव्यू करवाने ही क्यों ना हो, वो सब हम आपको पहले से रेडी करा के देंगे। आप जब अदरवाइज फिर क्या होता है, टिफिन का टाइम आता है, या फिर आईआईसी का इंटरव्यू का टाइम आता है, या फिर किसी जेआरएफ में अप्लाई करें, पीएचडी करने का इंटरव्यू का टाइम आता है, तब आपसे पूछते हैं कि सर इंटरव्यू कैसे दें, इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करें। तो वो उनके एक्सपर्ट ऑलरेडी पहले बताएंगे, अच्छा टिफिन में जाना है तो ये इंटरव्यू ऐसा है, इसमें जाना है तो स्किल आपको रखने पड़ेगी, ये करना तो ये करना, एवरीथिंग वी विल मेक श्योर कि जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको पास इस प्रोग्राम में अवेलेबल कराया जाए। अल्टीमेटली द प्रोफेशनल टॉक्स आर टारगेट कि हम आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करें। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज ऑब्वियसली वाला जॉब, एंड इट इज अ इनिशिएटिव बाय अस, और डेफिनेटली इस इनिशिएटिव बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वो सारी इंडस्ट्री हम बुलाएंगे, एंड एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर इंडिया के वो सारे बच्चे जो आईआईटी से, डिफरेंट आईआईटी से, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आप सब अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सब जगह से जो उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी मनचाही जगह पे उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे, जॉब के स्किल को देखेंगे, पेमेंट स्किल को देखेंगे, कितना पे कर रहे हैं, और फिर वो आपके कैलिबर को देख के वहां से टेस्ट कैंडिडेट उठाएंगे। तो जो सर ने आपको बताया कि राइट टाइम पे, राइट स्पेस पे और राइट कैंडिडेट मिलना बहुत जरूरी है, तो एक चीज हम यहाँ इसके थ्रू मेंटेन करेंगे। नो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सबको जॉब तो नहीं मिलेगी, डेफिनेटली ऑब्वियस बात है, जो सक्सेसफुल होगा उसको मिलेगा। वी आर नॉट मेकिंग एनी गारंटी फॉर दैट, वी आर द प्लेटफॉर्म, जो हम वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें से स्किल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उनको ग्रैब करके अल्टीमेटली इंटरव्यू में बैठना तो आपका ही है, इंटरव्यू देना ही आपका है, और सिलेक्शन भी आपका ही है ना। तो से मान लीजिए कुछ बच्चे के सर उससे अगर मान लीजिए ये नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो फिर क्या है? तो इसके लिए आपको मैं 2 चीजें बता दूं, वन इज एमटी एंड द सेकंड इज पीआईआर। फ्यूचर इन प्रायोरिटी, सॉरी प्रायोरिटी इन फ्यूचर, like if you are sitting with the same company next time, so we will make sure, we will ask them कि आपको वो किस बात प्रायोरिटी दे, all of us above from all of them जो भी बात में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। The first one is ये आपके लिए प्रायोरिटी इन फ्यूचर का टास्क रहेगा, या फिर उनको कल पे कोई रिक्रूटमेंट चाहिए, पहले वो आप सबके जो सीवी जो सिलेक्टेड हुए थे फिर वो कॉल करके आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे, दैट इज पीआईएफ प्रायोरिटी इन फ्यूचर, जो हम उनसे डिस्कशंस करके आपके लिए सेट करेंगे ना। Then second one is mock interviews, obvious सी बात है, आप इससे कुछ सीखोगे, को एक साल जोर से कहोगे भाई किस इंटरव्यू में कैसे डिस्कशन करना है, कैसे इंटरव्यूज होता है, पर इनको इंटरव्यू का फियर डेफिनेटली इतने सारे इंटरव्यू में बैठ के अप्लाई करने के बाद आपके अंदर से निकल जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, अभी इतनी एनर्जी क्या बोलो यार, ज्यादा आवाज तो मेरी निकल के आ जाएगी। हाँ, ओके,
तो मैं ओवरऑल इस चीजों को मैं कंक्लूड करता हूँ दोस्तों कि वी विल ओवरऑल प्रोवाइड यू दी more than 150 plus sessions by the 100 plus speakers and 25 plus mentors and लगभग 75 हम ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं या टारगेट एजेंसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टू कम ऑन दिस प्लेसमेंट सेल प्लेटफॉर्म एंड आपके रिक्रूटमेंट के लिए वो आपको जॉब्स का एक जो सिनेरियो प्रोवाइड करें। तो इसमें बहुत मेहनत का एक टास्क है हम लोगों के लिए भी एंड आई विल लाइक टू कि भाई आप जितना ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा ही हमारे लिए भी ये एक ऐसा होगा कि हाँ हम कुछ एक एफर्ट लगा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा है तो नहीं कि हम लोग कमा रहे हो ऐसा फिर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वी आर मेकिंग मनी इन दैट। ये एक टोटली नॉर्मल कोर्स के लिए किया जाने वाला प्रोग्राम है। सेकंड वन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केमिस्ट्री के फील्ड को या आगे आने वाले इसको नेक्स्ट ईयर हम पीएमबी फिजिक्स मैथ बायो और कुछ अभी भी फिजिकल बायो में भी इसमें कॉम्प्लीमेंट कॉपी पेस्ट करेंगे और उनके लिए भी इनको परफॉर्म करेंगे। सो दैट एक प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए बच जाए कि कल को आपको टेंशन ना हो कि क्या करना है। आप आए तैयारी करी अच्छे इंस्टीट्यूट गए पढ़े वहां से अच्छा घूम फिर के अच्छा वहां नहीं मिले तो घर आ गए प्लेसमेंट करिए आपने लिया और चले गए। आप इसमें कोई अपना इंटरनल मतलब ऐसा इन टर्म्स ऑफ जो आप कहेंगे कि फाइनेंशियल इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है वो टोटली इज फॉर योर आपके जो आपकी जो आने वाला फ्यूचर उसको सिक्योर करने के लिए उसको बेहतर अच्छा बनाने के लिए ये इनिशिएटिव है एंड आई होप आप सबको खूब पसंद आएगा मजा आएगा। कैसा लगा प्रोग्राम है अभी तो मेरा हल्का सा है इसका डिटेल वर्जन अलग से मैं रिलीज करूंगा क्योंकि समय नहीं है अभी। तो कैसा है अभी कैसा लगा तुमको? अच्छा है आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मेरी आवाज तुम क्लास में करते हो अच्छा है सर है ना एक की आई है आवाज ओके मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी हालत को कोई बात नहीं हम अलग से ही पार्टी करेंगे शाम में जाएंगे ओके ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड देखते हैं कि कैसा ये आप सबका इसमें रिस्पॉन्स रहता है जितना ज्यादा रिस्पॉन्स हो उतना ही अच्छा और उतने ही ज्यादा हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच। Now we are open for the questions. Have any of the question related to this? Yes, anyone have any question? अब कोई पूछेगा नहीं मुझे पता है कि सर कल अवेलेबल तो होना कल ही पूछ लेंगे आपसे क्लास में पूछ लेंगे आप ही पूछेंगे ओके इफ एनीवन हैव देन आई विल आंसर। कोई है कोई यूट्यूब पे पूछ रहा है ऐसा एनीवन ऑन यूट्यूब चल रहा है ना कंसर्न इज आल्सो गोइंग ऑन लाइव ऑन यूट्यूब तो कोई बात नहीं उनको मैं अलग से सेक्शन लेके सुन कर देंगे। ओके थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट अभी Now I would like to invite Dr. 𝗲𝗲𝗲𝗃 to say a few words about SR and IS. Good evening, all present here, respected Dr. Jayo ma'am and other dear students. It's an honor to present the great teacher, Ved Sir यहाँ पे थे, great associate editor, reputed journal of chemistry select. Now I would like to introduce our esteemed university, SR, Institute of Science and Technology, deemed to be a university. It has its campuses at 𝗾𝗲𝗲𝗹, वडापल्ली, तिरुचिरापल्ली and मोदी नगर NCR. The NRF आप जानते ही होंगे NRF के बारे में क्या होता है NIRF. एक्चुअली NIRF एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हर यूनिवर्सिटी को रैंक देती है इंडिया में चाहे वो IIT हो चाहे वो इवन आप कुछ हिंदू कॉलेज से हैं हंसराज कॉलेज सबको कुछ कॉलेज रैंकिंग मिलती है। Similarly, NIRF ranked its 28th rank in engineering ranking, 15 rank in pharmacy, 18 rank among university, 32 rank overall rank in of SRM-IST by NRF in 2023. This could be achieved through a series of study moves, precise action plan, and unwavering commitment to the pursuit of knowledge and excellence. SRM-IST not only provide graduation, post-graduation, and doctoral program in engineering, but also in
streams such as medical and health services, management, science and humanities, law and agriculture sciences. SRM IST, Delhi NCR campus जहाँ पे हम अभी हैं, was established in year 1997 and houses over 5,000 students and over 200 faculty members and a plethora of visiting faculty from across industry and various institutes. The NCR campus offers undergraduate and postgraduate courses in engineering and technology, management, pharmacy, hotel management, and computer application. The world-class infra provide an excellent blend of relevance and rigor to the teaching with robust industry interaction and research aimed to solving real life problems. The Delhi NCR campus excel at providing the ambience and serenity to allow a focused approach towards learning for its student with green campus. The Department of Chemistry at SRM IST provide a dynamic and engaging environment for budding engineer and research scholar with to explore the fascinating world of chemistry. It equips students with the practical skill and knowledge for their academic and professional journey in the field of engineering and science. The department has a group of vibrant, talented, passionate faculty members whose area of expertise cover a broad spectrum of topics: inorganic, organic, physical, and computational chemistry. To meet the latest requirement of industry, the department is continuously updating and revising its teaching, pedagogy, and research schemes. Thank you. So much, sir. I would like to extend my sincerest gratitude to our esteemed speakers and facilitators for sharing their expertise and insights with us today. With your contribution are invaluable and we are incredibly fortunate to have you guiding us on this journey. Now I would like to call Pradeep sir for the vote of thanks. Thank you so much, all the audience and all the staff members. And I would like to share my immense thankful to Professor Sanjay Viswanathan, Director, SMR IST, Delhi NCR campus, and Professor R.P. Mahapatra, the Dean SRM IST, Delhi NCR campus, Ghaziabad, Professor Naveen Elawat, Dean NCR, Dean Science and Humanities, SRM IST, Delhi NCR campus, Ghaziabad, Dr. Garima Pandey, HOD Chemistry Department, SRM IST, Delhi NCR, Ghaziabad. Thank you so much, ma'am. And special thanks to our special speaker of today, Dr. 𝗾𝗲𝗲𝗹, Associate Director Chemistry Select. Thanks for this wonderful event. Thanks for the wonderful speech, and thanks for the inspiring all the students present here. And I hope आप सब आज एक अच्छा एक अपने साथ एक नोट लेके जाएंगे जो मैंने जैसे आपको बोला. एंड डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपको आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करने वाला है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस. एंड आई थिंक दिस इज द टाइम. आज लाइव भी हमारा साथ दे चुकी है. थैंक यू सो मच. Invite everyone for our group photograph. But then I knew he started Train such a how much is our taxes? And the owner. So thank you so much.